Hello everyone. Today we are going to do chapter number 2 of our English book, Moments, The Adventure of Toto. This is a humorous and adventurous story of naughty monkey named Toto. एक monkey है जिसके ऊपर based story है and its name is Toto. तो Toto भी एक funny name है. The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read. So let's start the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the red little monkey tied to a feeding trough. And the monkey looked so out of the place here that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. The writer's grandfather purchased a monkey and its name was Toto from a Tonga driver by paying 5 rupees to him. The Tonga driver had tied the little red colored monkey to a feeding trough so that he could not run away. When the writer's grandfather saw the monkey, he had a desire to add him to the collection of animals which he had in his zoo at home. फीडिंग थ्रू मीन्स अ लार्ज कंटेनर ऑफ फीडिंग एनिमल्स जहाँ पे काफी एनिमल्स को फीड कराया जाता था एक टब टाइप का एक लार्ज कंटेनर हुआ करता था एंड टोंगा मीन्स अ हॉर्स कार्ट जहाँ पे हम जैसे बुलक कार्ट होती है बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं ऐसे हॉर्स कार्ट को टोंगा बोला जाता है आगे हॉर्स लगे होते हैं और आप सवारी कर सकते हो तो यहाँ पर ग्रैंडफादर उनकी कलेक्शन उन्होंने काफी अच्छी है एनिमल्स के ऊपर उनके अपने घर में ही एक छोटा सा जू है जहाँ वो तरह तरह के उन्होंने पेट एनिमल्स रखे हुए हैं तो उसमें उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीद लिया सिर्फ 5 रुपए के अंदर और जिसकी जो आईज थी वो रेड जो कलर था वो रेड कलर का था मंकी और बहुत नॉटी सा था तो उनको उसको देख के ही इतना अट्रैक्शन हो गया तो उन्होंने सोचा कि इसे अपने जू में शामिल करना चाहिए Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mystery beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, but his hand looked dried up as soon. They had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good luck. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of the reach of his hand. Anglo-Indian here means a person relating to both Britain and India, जो इंडिया से भी रिलेट करता है और ब्रिटेन से भी रिलेट करता है. Pickled means food that is preserved in vinegar. जब हम विनेगर में अपने किसी फूड को for a long lasting रखना चाहते हैं तो it was the food preserved. We should preserve the food in vinegar. Scooping up means lifting. Now the writer gives a description of Toto. He had bright shiny eyes which were full of mischief. एक naughty eyes थी, bright eyes थी Toto की और the eyebrows were deeply set on his face. His teeth were like pearls. Many ladies belonging to the Anglo-Indian community got scared when they saw his teeth, which were displayed when he smiled. तो जब वो स्माइल करता था उसके teeth दिखाई देते थे और एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी जो लेडीज थी वो उनसे थोड़ा सा डर जाती थी उसके जो टीथ थे वो पर्ल की तरह मोतियों की तरह व्हाइट कलर के थे जब वो स्माइल करता था तो वो दिखते थे Toto hands were dry and wrinkled as if
They had been dried in the sun like pickled vegetables. जैसे हम vegetables या अचार डालते हैं विनेगर में रखते हैं, तो जब टोटो के जो हैंड थे वो बहुत ही ज्यादा ड्राई थे और उसमें काफी ज्यादा रिंकल्स थी कि जैसे उसको धूप में रख दिया गया, हम कंपेयर किया गया एज अ पिकल को जो हम रखते हैं धूप में सेकने के लिए. He had a long tail. टेल थी उसकी लंबी थी. The writer's grandfather thought that the tail added to the good looks of an animals. कि एनिमल्स की अगर टेल हो तो वो अच्छे लगते हैं. उनकी लुक्स को एनहेंस करने के लिए उनकी टेल का काफी योगदान है. Toto's tail was like a third hand for him. जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, हम दो हाथों से काम करते हैं, तो राइटर कहता है कि टोटो की टेल होने से वो ऐसे वर्क करती थी जैसे उसका थर्ड हैंड हो, तीसरा हाथ हो. It helped him hang from a branch of tree. वो hang कर सकता था उस tail से. He also used it to lift objects which were beyond his hand's reach. जो उस हाथ reach नहीं कर पाते थे जिस object थे, तो वो अपनी tail से, अपनी पूंछ से वो सामान ले लेता था, object ले लेता. Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely. Also, we thought to peg fastened into the wall. Now, here peg means a hook. The writer's grandmother was against the grandfather's attitude of bringing new pets, birds, and animals. ग्रैंडमदर थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हर दिन एक दूसरे दिन के बाद ग्रैंडफादर जो है कोई ना कोई नेट पेट पकड़ के ले आते हैं, और चाहे वो बर्ड हो या कोई एनिमल हो. So the grandfather thought that they would conceal this fact from her until she was in good. ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब इस सीक्रेट, इस जब मैं पेट लेकर आऊं उसको सीक्रेट ही रहने दें, जब तक ग्रैंडमदर का अच्छा मूड नहीं होता तब तक उनको नहीं बताते. At that time, they would disclose this to her. The writer and the grandfather secured Toto in little cupboard in the writer's room. In order to be sure that Toto did not escape, they tied him to a hook in the wall. तो उन्होंने सोचा कि इसको छुपा देते हैं कहीं. तो जो राइटर था और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को एक छोटे से कबर्ड के अंदर राइटर्स के रूम में ही छुपा दिया, और उनको लगा कि कहीं वो वहां से भाग ना जाए, तो उसको उन्होंने टाई कर दिया एक हुक से जो वॉल पे लगा हुआ था. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornament paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. Here, ornamental means decorative, naked means uncovered, wrenched means broke, socket means attachment, shreds mean cut into thin slices. The writer and his grandfather went to Toto after a few hours. The sight was shocking. Toto had torn the decorative wallpaper. He had broken the hook and had escaped from his bindings. Also, he tore the writer's blazer into thin pieces. अब वहां का जब टोटो राइटर और उसके ग्रैंडफादर टोटो को देखने के लिए वापस आए उसके रूम में, राइटर के रूम में, तो दे वर शॉक कि वहां तो टोटो है ही नहीं, और जिस वॉल पे हुक था उस वॉल का जो डेकोरेटिव वॉल पेपर था वो उतर चुका था, जो सॉकेट था वो निकल चुका था, जो हुक था वो ब्रोक हो चुका था, और वहां से जो टोटो था वो गायब था. इवन जो वहां पे ब्लेजर लगा हुआ था राइटर का, कोट जो पहना करते थे वो
वो भी फटा हुआ था छोटे छोटे पीसेस. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. The grandfather was quite delighted to see Toto's adventure. बहुत सरप्राइज से ये तो बिल्कुल एडवेंचर हो गया. मैं तो हम तो लोग तो बांध के गए थे और वो बाहर हो गया. He felt that Toto was very clever. बहुत चालाक है Toto. He said that it would have given him more time. He would have tied the thin pieces of the writer's torn blazer into a rope and would have escaped out of the window. मैं सोचा अगर इसे थोड़ा सा टाइम और मिलता तो इसी ब्लेजर को वो एक रस्सी बनाकर वहां से भागने के लिए कामयाब हो जाता विंडो के माध्यम से. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next morning to collect his pension in the Saharanpur, decided to take him along. Sociably means here a friendly manner. Now here Toto was shifted to a servant quarter. अब उसको shift कर दिया गया Toto को वहाँ servant quarter में और उसको एक cage में डाल दिया गया. He was put in a cage. He would live with other pets in the grandfather's zoo. जो उन्होंने zoo बना रखा था grandfather ने कहा कि अब इसको cage में रखो ताकि pets के साथ ही रखो. The zoo comprised of a tortoise, a pair of rabbits, a squirrel, and the writer's pet goat. वहाँ पे काफी अदर एनिमल्स भी थे जो जिसमें से एक टोटवाइज था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, स्क्वेरल थी, ग्लैरी थी और जो राइटर्स की एक गोट थी, बकरी थी. Toto was very mischievous. He did not let the animals sleep at night. उस दिन वहां पर इतना हंगामा किया मंकी ने, टोटो ने, किसी भी एनिमल को उसने रात भर सोने नहीं दिया. The writer's grandfather had to leave for Saharanpur the next day. He decided to take Toto along as he was unmanageable. अब Toto बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, बहुत शैतान था. तो ग्रैंडफादर को अगले दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए. तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको भी साथ में लेके चलता हूँ. Then, unfortunately, I could not accompany grandfathers on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas cage bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll out about the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. Now, abode here means home. Now, the writer was disappointed as he could not accompany his grandfather and Toto on the trip. अब writer भी जाना चाहता था grandfather के साथ और Toto के साथ, लेकिन वो unfortunately नहीं जा पाए किसी reason से. His grandfather narrated the happening to the trip to him later. और सारा उन्होंने पूरी कहानी आने के बाद राइटर को सुनाई कि उस ट्रिप पे उनके साथ क्या हुआ. He had got a special bag for Toto. एक special bag को अपने साथ लेके गए थे Toto के लिए. It was made of a strong material. एक strong material से बना हुआ था canvas. He placed some dry grass at the bottom of the bag. उन्होंने घास बिछाई बैग के अंदर. On the trip, the bag would be Toto's home as he would live in it. The bag had a zipper on the top of it. उन्होंने बैग के अंदर घास बिछाई और टोटो को उसमें डाला और उन्होंने कहा कि ये टोटो का घर हो जाएगा और वो उसमें रहेगा. ऊपर से बैग के ऊपर जिप भी है तो मैं जिप बंद भी कर दूंगा.
The writer's grandfather ensured that when the bag was closed, Toto would not able to escape out of it. Neither could he come out of the opening as it was closed with a zipper, nor could it bite the strong canvas material in order to run away. Still, Toto made unsuccessful attempts to come out of the bag. Due to this, many times the bag would roll on the floor or it would certainly jump in the air. These movements were noticed by the people on the railway platform and made them curious to know what was inside the bag. अब राइटर नहीं जा पा रहा था ग्रैंडफादर और टोटो के साथ उस ट्रिप पे, तो ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं आपको नरेट करूंगा क्या क्या हुआ था इस ट्रिप पे। उन्होंने आने के बाद उसे बताया भी। और जब वो स्पेशल बैग उन्होंने एक टोटो के लिए बनाया जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल कैनवास से बना हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ड्राई ग्रास लगाई बॉटम ऑफ द बैग में नीचे की तरफ, ताकि वो अपना घर समझे और उस बैग में रह ले। और ऊपर जिपर भी थी कि मैं इसको बंद कर दूंगा अंदर डाल के मंकी को, टोटो को। द राइटर्स ग्रैंडफादर इंश्योर कि भी वो बैग बंद हो जाए टोटो के जाने के बाद, और वो वहां से एस्केप नहीं कर पाएगा, गायब नहीं हो पाएगा, और ना ही वो बाहर निकल पाएगा उस बैग से, क्योंकि मैंने जिप पे लगा रखा, मैं जिप को बंद कर दूंगा। और वो बाइट भी नहीं कर पाएगा, उसे खा भी नहीं पाएगा। कैनवस जो मटेरियल है बहुत स्ट्रांग होता है और वो भागेगा नहीं। लेकिन टोटो ने काफी अटेम्प्ट्स करे भागने के लिए, जिप खोलने के लिए, और उस चक्कर में कभी कभी वो बैग जो है रोल हो जाता था फ्लोर पे गिर के, और कभी सर्टेनली जंप मारता था जब वो, तो बैग उठता था एयर में। तो ये सारी जो मूवमेंट्स थी वो लोग देख रहे थे और जानने के लिए क्यूरियस थे कि ऐसे कैसे बैग अपने आप कभी जंप मार रहे हैं और कभी रोल हो रहा है फ्लोर पे। तो वो जानना चाहते थे इस बैग के अंदर क्या है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnside, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Turnstile here means a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowed one person at a time to pass through। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे आप जाते होगे और टिकट काउंटर में जाए या पास में आप टच करते हो और वहां से निकलते हो, तो वैसे ही एक पास थ्रू बनाया हुआ था, तो वहां पर वो पहुंचे थे। टोटो रिमेन सिक्योर्ड इन द ग्रैंडफादर्स बैग, अंदर रहा सहारनपुर जब तक नहीं आया। और एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन द राइटर ग्रैंडफादर वाज टेकिंग आउट हिज टिकट टू क्रॉस द टर्नस्टाइल। उन्होंने टिकट निकाला कि अब टिकट मुझे टच करना पड़ेगा और मैं गेट ओपन होगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा, जैसे कि मैं मेट्रो स्टेशन में आपने देखा होगा निकलने के लिए रखा होगा। एट द टाइम जब टोटो ने क्या किया, अपना बैग में से सिर निकाला और स्माइल कर दी उसने जो टिकट कलेक्टर था उसके ऊपर। The poor man was taken aback, but with a great presence of mind, and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Annoyance means to anger someone. So here, the ticket collector was astonished to see a monkey in grandfather's bag. He recovered quickly and asked grandfather to pay the ticket money for traveling with the dog. उन्होंने देख तो लिया बैग के अंदर क्या है, मैंने कहा ये मंकी है, तो उन्होंने कहा कि आपके बैग के अंदर डॉग है और जिसे मैंने देख लिया है, और आपको जो टिकट है उसके लिए पे करना पड़ेगा, आप डॉग के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं विदाउट टिकट। तो थोड़ा सा वो गुस्से में भी था टिकट चेकर। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over at his fare.
Now here grandfather, here vain means an unsuccessful attempt, and quadruped means an animal which has 4 feet. जो animal 4 feet तक हो. Fair means ticket price. Now, grandfather was unsuccessful in explaining to the ticket collector that Toto was a monkey and not a dog. उनका ये monkey है, dog नहीं है. He insisted that Toto was not even an animal with 4 feet. कि ये ऐसा एक एनिमल है जो मेरे साथ जा रहा है, वो 4 फीट का भी नहीं है. अगर 4 फीट का होता तो आप उसके चार्जेस लगाते. But the ticket collector was firm that Toto fell in the category of dogs. लेकिन उसने बोला कि चाहे टोटो हो, मंकी हो, जो भी हो, ये डॉग्स ही कैटेगरी में आता है और आपको उसके लिए मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि है 3 रुपए. 3 rupees you have to pay for Toto's ticket. Then the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased, triumphant look, and said, "No charge, it's not at all." Prod, prodded means pushed. The ticket collector took a close look at the tortoise, pushed it slightly, and announced that the grandfather was not required to buy a ticket for it, as it did not fall in the category of dog. So उसने देखा कि अंदर tortoise भी है. अब कछुआ देखकर पहले तो टिकट कलेक्टर देखता रहा, तो उसने बोला कि डोंट वरी, आपको इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. ग्रैंडफादर को बोला, क्योंकि उसने अपनी फिंगर से चेक कर लिया था उसको और कहा था कि ये किसी भी डॉग की कैटेगरी में नहीं आता. सो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in a stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. So he surprised he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. Stable here means where we keep our horses, building set apart and adapted for keeping horses. Halter here means a strap or loop placed around the head of the horse or other animals used for leading or tethering it. The writer's grandmother finally came to know of Toto's presence in the house. She allotted him space in the stable along with the family donkey, Nana. On the first night in the stable, grandfather visited Toto. He found Nana restless, pulling his robe in order to stay away from the heap of hay. ग्रैंडमदर को जब पता लगा तो उन्होंने अलाउ करना ही था, ग्रैंडफादर ने नहीं मानना था. तो उन्होंने क्या कहा कि इसको स्टेबल में रखें जहाँ पे अदर हॉर्सेस वगैरह को रखा जाता है. तो वहाँ पे एक डॉगी की फैमिली रहा करती थी, नाना की, और उनका कि उसी के साथ रहेगा. तो ग्रैंडफादर जब गए तो वहां उन्होंने देखा कि वो तो नाना तो बिल्कुल ही रेस्टलेस है, उसकी रस्सी को खींच रहा है वो कि वहां से मैं निकल जाऊं. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Haunches here means back. Grandfather hit Nana on the back in order to stop it. जब वो आपस में लड़ाई उनकी देख रहे थे, उन्होंने नाना को हिट करा, स्लैप मारा उसको, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई बंद कर दें. उन्होंने ऑर्डर उसको कहा कि रुक जाओ. नाना jumped back with a jerk and Toto was dragged along with him. तो जैसे ही नाना ने जंप किया, उसी के साथ टोटो भी उनके साथ खींचा चला आया. A great treat for Totos during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath.
First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run quickly as he could the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during his performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Now, here the other incident. In the winter season, Toto enjoyed having a warm bath. Grandmother ने उसको नहाने के लिए पानी दिया. He would pretend to selfish and before starting his bath, he would check the temperature of the water. और ऐसे temperature check करने लगा जैसे कि उसने करता हुआ देखा था grandmother grandfathers को और बिल्कुल कॉपी कर रहा था राइटर को कि जैसे वो एक एक स्टेप लेके अंदर जाता था टब के अंदर वैसे ही वो एक स्टेप लेके टेम्परेचर चेक करता अपने बाल्टी में जा रहा था. फाइनली ही वुड सिट इन द वाटर. बैठा पानी के अंदर और उसका जो मुंह था वो तो भारी था फेस और उसने अपने आप को सोप से रब करना स्टार्ट कर दिया. When the water became cold, he would run out of its stove in the kitchen in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा हुआ तो फटाफट गया और उसने कहा मैंने नहा लिया और मैं अपने आप को सुखाता हूँ किचन में जो स्टोव में गैस जल रही है फायर हो रही है उसके आगे. Toto got annoyed if he was laughed upon. He would get hurt and then refuse to take bath. The writer recollects an incident when Toto had almost boiled himself. उसको बड़ा अजीब लगा कि देखो हंसने वाली सिचुएशन थी कि कैसे वो नहाया जब तक पानी गर्म था वो नहाता रहा जैसे पानी ठंडा हुआ अपने आप को सुखाने के लिए किचन में चला गया. और वहां पे क्या हुआ A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. And Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. और जब उसने देखा कि किचन में जो है केटल है वो वहां पे रखी हुई है किसी ने टी बॉईल करने के लिए और वो गया और उसने कुछ सोचा नहीं और उस जो कहा कि मैं इसका लिड उठा के देखता हूँ कवर उठा के देखता हूँ कि पानी के अंदर क्या है. Finding the water just warm enough for a bathe, he got it with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and called him. Half boiled out of the kettle. तो जब पानी उबल रहा था चाय के लिए उसने देखा केटल के जो बाहर का सरफेस है वो तो ठंडा है और अंदर गर्म था तो उसने वो वहीं पे बैठ गया और बार बार वो जंप कर रहा था हॉप कर रहा था ऊपर नीचे और उसी समय ग्रैंडमदर आई और उन्होंने वहां पे उसको पुल किया बाहर करने के लिए. तो होल्ड हिम हियर मीन्स पुल हिम आउट. Now here in a large kettle water was boiling on the stove. Toto climbed up to the stove and removed the lid from it. Boiling water से उसने स्टोव की जो ऊपर चढ़ा और lid को हटा दिया. He felt that the water was warm enough for him to take a bath. उसने कहा कि पानी तो गर्म हो गया मैं नहाने का पानी है शायद ये और मैं नहा सकता हूँ. He entered the kettle with his head out of it. और उसने अपना सर जो है उसमें डालने की कोशिश करी डाला. When the water started boiling जब वो boil करने लगा और गर्म होने लगा it became hot for Toto. उसने कहा ये तो पानी बहुत गर्म हो रहा है तो उसने अपना जो सर था केटल से बाहर निकाला. He thought of coming out of the kettle but as the temperature outside was cold for him he stayed in. जो टेम्परेचर जो था वहां का बाहर का ठंडा था तो उसने कहा मैं अंदर ही रहता हूँ. Toto kept on jumping in the kettle for a while. थोड़ी देर के लिए तो यही होता है जब आप बॉइलिंग के लिए कुछ चीज रखते हो तो वो धीरे धीरे गर्म होती है देन इट स्टार्ट बॉइलिंग. तो उसको मजा आ रहा था वहां पे बैठ के
हाँ कर गरम गरम पानी से, तो उसका मन नहीं कर रहा था वहां से निकलने। तो एकदम सडनली जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो अंदर आ गई और उसने देखा कि she took the half boiled monkey out of the kettle, कि वो आधा तो बॉईल हो गया, आधा हिस्सा उसका बाहर ही था, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया ग्रैंड मदर ने मंकी को। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces whenever one of my aunt came near him. He made every effort to get hold on her breast and tear a hole in it. तो जोजो के बारे में बहुत नॉटी था, मिस्चीफ था। If there is a part of our brain that governs our ability to create mischief, हमारे अंदर कोई पार्ट है जो ये सारा चीजें हरकतें सोचता है और करता है, तो वो टोटो के ब्रेन में जरूर है, वो हाईली डेवलप्ड है, ऐसा राइटर ने बोला। Then that the part Toto's brain was highly developed as he had great capacity to do mischief. इस तरह की हरकतें वो बेचारा करता है। He was always busy doing mischief. सारा दिन कभी इधर उधर मचाना, कभी उधर मचाना। Whenever the writer's aunt passed him, जब भी राइटर की जो आंटियां हैं वो आती थी, तो वो क्या करता था, उनकी जो ड्रेस होती थी उनको फाड़ देता था, उसमें होल कर देता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plough and made it exit through a window. He found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Spite here means a desire to hurt, annoy, or offend someone. Chattered here means the sound made by the monkey. Now the writer recollects another incident. एक नया इंसिडेंट हुआ, टोटो ने क्रिएट करा अपने बदमाशियों से, मिस्चीफ से। At lunch time, लंच का टाइम था, a dish of rice was placed on the dining table. पुलाव बनाया, डाइनिंग टेबल पे रखा। When the family reached to eat, they found Toto eating it. जब तक फैमिली आती है, उन्होंने देखा कि टोटो ऑलरेडी खा रहा है पुलाव। गुस्सा तो सबको आया उसको देख के। The writer grandmother screamed at the Toto and in response he threw a plate at her. जब ग्रैंडमदर ने उसे रोकने की कोशिश की, चीख चिल्लाई, तो टोटो ने क्या किया, वो जो प्लेट में जिसमें पुलाव खा रहा था वो उनके ऊपर फेंक दिया। When the aunt tried to catch Toto, जब उसकी आंटी आई हुई थी तो उन्होंने टोटो को पकड़ने की कोशिश करी, तो उनके मुंह पर उसने a glass of water फेंक दिया। और जब ग्रैंडफादर वहां पहुंचे, when the grandfather arrived, Toto left the place through a window with the dish of rice along with him. वो अपने चावल की प्लेट साथ में ले गया और जो खिड़की थी वहां से निकल गया जैसे ही ग्रैंडफादर आए। Toto remained out of the entire afternoon. पूरे आफ्टरनून, पूरे लंच टाइम में, पूरी दोपहर वो बाहर ही रहा, अंदर नहीं आया। और he sat on a branch of jackfruit tree, determined to eat all the rice. बाहर ही एक पेड़ लगा हुआ था, जैकफ्रूट का पेड़ था, और वो वहां बैठ गया और राइस खाने लगा। As the grandmother had screamed on him, he wanted to annoy her further and soon. After eating the rice, he threw the dish. It broke into several pieces. अब जब ग्रैंडमदर आई, बाहर चिल्लाने लगी, तो उसने फिर वही किया, गुस्से में आके सारे चावल तो खा लिए, लेकिन जो डिश थी, जो प्लेट थी, उसने ब्रोक कर दी, फेंक दी, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गई, 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him.
for 3 rupees. Finally, grandfather realized that Toto was not suitable to be kept at home. They could not afford to frequent nurses that he gave them. He tore clothes, curtains, wallpaper, and broke dishes. So the grandfather sold Toto back to the same Tonga driver for the sum of rupees 3. तो उन्होंने डिसाइड करा कि इसको तो हमको तो रख नहीं सकते, बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है और बहुत नुकसान कर रहा है, ऐसा नुकसान जो हम भरपाई नहीं कर सकते। सारा दिन कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी कर्टेन्स उतार देता है, कभी वॉलपेपर उतार देता है, कभी डिशेस तोड़ देता है। तो उनका कि हमारे साथ रहने लायक नहीं है, ये ऐसा पेट नहीं है, हम इसे बांध के नहीं रख सकते। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसी टोंगा ड्राइवर से जिससे वो केक खरीद के लेकर आए थे टोटो को, उनको वापस ही बेच दिया 3 रुपए में। So this was a story